ହେଇନଥିଲା so good morning everyone. Hi, hope all of you are doing fine. Right now I will start the current affairs once again. ଯେମିତି ଅଛି ଆମେ କରିବା ଆଉଥରେ ଠିକ ଅଛି so I'm be waiting at that moment you can see the slides and all that na ongoing Biswas ongoing Adarsh batch is in the YouTube ଅଛି ତାପରେ yes yeah everybody join right and hope you like the current affairs समस्त देखछन त current affairs session ओडा समस्त last class जहाँ भी पढ़े थी समस्त देखी दियंतु हला and that is very important मु जहाँ भी पढ़ौची it's very important. Hi DP Mishra, good morning everyone है ना जहाँ भी पढ़ौची that is very important है ना ठीक है क्वेश्चंस वाला रिसर्च लेवल था ताकि क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड माने जतल भी क्वेश्चंस आसीबो ना यू कैन डू ठीक है these are the batches तो जाने थबो try to enroll in the paid batches so that we can discuss more and सेडी कंटेंट आउरी बेसी था थबो हम पकरे and सेटी टाइम रेस्ट्रिक्शंस भी नथबो and we could have a full fledged discussion आ तुम ए सब पेपर भी देखि छ राइट ए सब पेपर केमिते आज का डेट रे केमिते क्वेश्चंस आछी so just forget about this one liner thing and आज का डेट रे one liner काम दोबनी and you have to तुमको full throttle जिया पड़िबो right. This is the others batch. Sujata ma'am is on 9 a.m. then myself at Sujata ma'am at 8 a.m. then myself at 9 a.m. then Arpita ma'am at 5 p.m. okay. So this is the rate, you know, this is very nominal rate 4,500 and 9,999 okay. Try to join everyone ठीक है this is a mains batch those who are appearing for the mains this is 7,500 and optional batch 4,000. I myself will be taking the PSIR optional so I hope you're watching so let me tell you see when you're attending questions na तुमको टिके conceptual हवा को पड़िबो राइट जेतल तुम किछि जिंस पढुछ ना तो टिके डीप जाओ आजिका डेट रे कंपटीशंस बहुत बढ़ी गलानी तो जेहेतु कंपटीशंस बढ़ुची देन तुमको भी वन स्टेप फॉरवर्ड जिया पड़िबो इफ यू डोंट गो वन स्टेप फॉरवर्ड देन द लॉस विल बी योर्स बुझी परछ ठीक अछि सो व्हाट एल्स आई एम टीचिंग आगु को बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ेबी जो आईआर रिलेटेड भी अछि एंड किछि क्वेश्चंस मु टॉपिक रिलेटेड भी आनिबी जोडा कि इट विल बी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स so the first one is circuit ऊपर क्वेश्चंस अछि आज मु सर्किट टिके डिटेल नेबी जेतु आईआर पार्ट अछि तो आई विल टेक इट इन अ डिटेल ताकि तुमको तुम जानि परियो कि क्वेश्चंस केमिति भी आगु को फ्रेम हे पारि ठीक अछि द फर्स्ट वन इज any misadventure Rajnath Singh flags Pakistan military built up in Sir Creek wants a decisive response ठीक अछि so first of all I just want to know that जब तुम Sir Creek विषय पढछ ना what do you know about that Sir Creek right तुम केबे सुनिथलो Sir Creek विषय रे एमि तो न ना आज सुनिछो right let me see this ए जो बॉर्डरटा अछि so let me this pen yeah just wait a minute okay just see ए जो बॉर्डरटा अछि see let me do this okay so what you have learned before about Sir Creek I'm Sir Creek माने बुझी पाछो this small strip of island this small strip of land जेतु आमे there's a small dispute कोन already बहुत बड़ा dispute हे गलानी 19 not 14 रो चलचे dispute टा right
जेतोले डिस्प्यूट चलथिला ना we never knew that it will become a huge one, right? And out कथा देखंतु एठी है ना, this is the international border, एटा ला international border, एठो हला dispute चलछि, right? This is the dispute one, काई एडा हला marshy lands, these are marshy lands, ठीक अछि। तो आउट जिंस मोडा देखिबी तुमको, आउट जिंस देखिबी, या आउट जिंस देखिबी, do you know what is this? Do you know what is this? And एठो आसे गुजरात जाउछि, what is this? This is international border, हला एटा international border, एडा हला हमर LOC, ठीक अछि। LOC या तको एक्चुअली कहतले कि आगुर तको कहतले सीज फायर लाइन, हला सीज फायर लाइन। LOC केबे कहले 1972 शिमला एग्रीमेंट रो LOC कहवा गला, ठीक अछि। 1972 आको शिमला एग्रीमेंट अब ए जो बॉर्डर दियाला जो जम्मू कश्मीर रो अछि, दिस वाज कॉल्ड कोन LOC कहवा गला, पर एटा सीज फायर लाइन थला, बिकॉज़ ऑब्वियसली एटा डिस्प्यूटेड टेरिटरी अछि। एंड वी नो फ्रॉम जम्मू टू दैट कच्छ है ना, ताको ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। आपको इंटरनेशनल बॉर्डर कौन थी, आपको LOC ही कौन, ठीक अछि। नॉट इवन दिस आपको भी इंटरनेशनल बॉर्डर कहबेनी, काहे कि when we will take the POK ता पर हम इंटरनेशनल बॉर्डर डिसाइड करियो, बट राइट नाउ एटा हला इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक अछि। दिस इज द बॉर्डर, आउट कथा, दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, एटा को जिवो टिल जम्मू, टिल एटो में जिवो टिल जम्मू को जिवो, ठीक अछि। लेट मी टेल अबाउट द डिस्प्यूट, ठीक अछि। एटा जानतो वाटर वार थला, तो ए स्मॉल पीस ऑफ मार्शी लैंड को हमें सर्क्रिक कहा जाए, ठीक अछि। देखो एक्चुअली डिस्प्यूट के स्टार्ट ए सेंचुरी ओल्ड डिस्प्यूट, ओके। एटा मु काहे को जानछो, आ भितरे प्रॉब्लम हला, यू नीड टू नो व्हाट्स एक्चुअली कोन हेतला अगर भी नो हमर बॉम्बे जो प्रोविंस थिला, जो बॉम्बे प्रोविंस थिला ना, बॉम्बे ता भितरे दीटा डिवीजन थिला, गोटेला सिंध आ कच्छ, ठीक अछि। कच्छ आंको भितरे बॉर्डर डिस्प्यूट ता थिला, बॉम्बे प्रोविंस जेतला 1908 कथा कहूछि, सेतोले दीटा डिवीजन भितरे माने कोन बॉर्डर डिस्प्यूट थिला, ठीक अछि। एंड सेतोल कोन कमिश्नर थांती, हेड थांती कमिश्नर। एट कोन लिखा अछि 1908 रे, द डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द राव रूलर ऑफ कच्छ and the Sindh government over the collection of firewood from the creek area, from this area रे एठी कोन अछि, एठी ला सिंध, एठी ला कच्छ, ठीक अछि। आंको बॉर्डर डिमार्केशन ठीक से हेनी, who will collect the firewoods सेडा नै कि प्रॉब्लम होतला, ठीक अछि। देन 1914 रे जितला डिस्प्यूट जितला बाहर दिला, देन बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मैप places the boundary on the eastern bank of the creek, but its para 10 speaks of the mid channel being the boundary, ठीक अछि। देखो 1914 रे प्रॉब्लम कोन हेतला जानछो, लेट मी erase this, हां ठीक अछि। या जो 1914 जो वाटर वॉर हेतला, एक्चुअली जो 1914 जो पैरा होतला आमरो एडा ईस्ट ना, एडा वेस्ट ना, 1914 रे कोन कोतला एडा हला बाउंड्री बिटवीन व्हाट, एडा सिंध एंड कच्छ। तो माने कोन बाउंड जदी एडा सिंध और कच्छ भितर बाउंड्री हेले माने पूरा फ्लैंक ता तांकर हे जिवो, पूरा फ्लैंक ता तांकर हे जिवो, बुझि पाछ, पूरा फ्लैंक ता तांकर हे जिवो। तो पाकिस्तान इज क्लेमिंग दैट, काहे कि एडा पूरा तांकर, काहे कि एज पर 1914 एग्रीमेंट, as per 1914 agreement they are claiming whole border, ठीक अछि। बट एडा आउ गोटे पैरा अछि, ठीक अछि, आउ गोटे पैरा कोन देछि, but its para 10 speaks of the mid channel being the boundaries। देखो जदी मिड चैनल जदी कहबो ना, जदी मिड चैनल जदी कहबो ना, ए जो रेड डॉटेड लाइन ता एडा है मिड चैनल। आ भीतर कोन कहछि, दिस सर्क्रिक जो सर्क्रिक लाइन ता अछि, सपोज हाउ विल आई मेक इट अंडरस्टैंड, देखो एडा सपोज मार्शी एरिया अछि, तो दिस मिड चैनल हैला कोन कहछि, दिस इज द बाउंड्री अप एज पर para 10 ऑफ 1914 एग्रीमेंट। किंतु ता भीतर से आ गुटे कोन कहछि, द ईस्टर्न फ्लैंक कैन आल्सो बी द बाउंड्री। तो एटे टिके कोन प्रॉब्लम हे जातला कि माने बाउंड्री कोटा बा, माने पाकिस्तान सेज दैट दिस ईस्टर्न फ्लैंक इज द बाउंड्री, काहे कि ताको पूरा एरिया टा मिल जिवो। बट एक्चुअली जितला para 10 कहउथला ना, जेतोले नेविगेबल वाटर थाय ना, नेविगेबल वाटर कोन गोटे प्रिंसिपल यूज करंती, थालवेग प्रिंसिपल, ठीक अछि। थालवेग प्रिंसिपल कोन कोनती, जो मिडिल लाइन थाय, जो मिडिल पोर्शन ता थाय, जो दिस इज द मिडिल पोर्शन बिटवीन दिस, जो एटा
आकु आकु करबा कथा बाउंड्री बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान बट दे विल नहीं हमको थालबेग कहीं हमको ईस्टर्न फ्लैंक दरकार कहीं से कहूची मार्शी एरिया रे कोन होबो लागिबो नाही कोन लागिबो नाही थालबेग प्रिंसिपल लागिबो नाही से जिनसोडा से माने कहउछंती ठीक अछि मार्शी एरिया रे थालबेग प्रिंसिपल लागिबो सेटा की कहउची पाकिस्तान कहउची राइट बट लेट मी सी या तापरे आ गोटे कथा लगी एप्रिल मे 1965 वॉर देखो 1965 वॉर जो तुम जानछो ना 1965 वॉर एक्चुअल वॉर हैपेंड वेयर अगस्त रे थला ठीक अछि किंतु ता पूर्व पाकिस्तान 4 मास पूर्व कोन करथला ऑपरेशन डेजर्ट हॉक आनथला आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वॉर 1965 जो वॉर हेतला एक्चुअल वॉर हेतला 65 रे ता पूर्व 4 मास तळे कोन हेतला पाकिस्तान डजन कोन ऑपरेशन डेजर्ट हॉक आनथला ता भीतर से माने आ भीतर किछि टेरिटरी से माने कब्जा करथिले परे स्क्रिमिश हे कि इंडियन फोर्सेस तांको भगे देथिलु ठीक अछि ठीक अछि ठीक देन इंडियन पाकिस्तान आर्मीज क्लैश इन द रन ऑफ कच्छ एटा थिला तापर 1965 रे कोन हला कि 1968 रे कोड हला कि इंडियन पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ऑन द कच्छ बॉर्डर गिव्स इट्स अवार्ड व्हिच अपोज 90% ऑफ इंडियाज क्लेम देखो 1968 रे ट्रिब्यूनल माने आ भीतर की मध्यस्थता करला आ भीतर इंग्लैंड मध्यस्थता करला से कहले नाही ओटे ट्रिब्यूनल आनिबा देन वी विल सॉल्व व्हाट वी कैन डू ठीक अछि आ भीतर कोन हला इंडिया पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ऑन द कच्छ बॉर्डर अराइव्स इट्स अवार्ड व्हिच होल्ड्स 90% देखो आको कोनते इंटरनेशनल रिलेशन है लिबरलिज्म अप्रोच कोनती ठीक अछि लिबरलिज्म अप्रोच कोन करे तमे आसो कथा वार्ता हुओ देन वी कैन अवार्ड आई मीन जहा करि परिया प्रॉब्लम हला आ भीतर कोन हला 90% ऑफ माने इंडियन टेरिटरी तो दे परिबे तो से कोन कोची 90% ऑफ द टेरिटरी बिलोंग्स टू इंडिया एंड 10% टेरिटरी बिलोंग्स टू पाकिस्तान ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ठीक अछि तापर कोन हला 1997 रे कोन इंडियन पाकिस्तान रिज्यूम कंपोजिट काहे कि ता मझे कोन हेतला 71 वॉर हेतला बुझी परछो तापरे हाँ 71 वॉर तापरे कोन ए जो क्लेम ऊपर जो कथा वार्ता ना सब ठंडा बक्सा रे पळेला आ कथा वार्ता हो नथला तो India and Pakistan resume composite dialogue and among the issues is the resolution of the circuit dispute ठीक अछि एडा हला कि नॉर्मल जिंसो रे एबे खाली डायलॉग चलछि बट प्रॉब्लम हला कि आ भीतर किछि नै आ माने आ सॉल्यूशन किछि बाहर यार नै एंड रियलिज्म पर्सपेक्टिव रे कोहंती जे कि यू शुड वेज अ वॉर ऑन देम रियलिज्म पर्सपेक्टिव रे बट लिबरलिज्म पर्सपेक्टिव रे कोन कोहंती नै तुम कथा वार्ता रे सॉल्व करो किंतु कथा वार्ता रे कोन सॉल्व होछि पाकिस्तान जेतरो चाहछि माने आई मीन दे आर बिल्डिंग forces at that area if they are building forces at that area then that will be a problem and Raja Singh kon koithale ki from here only we can reach Kodi from here only we can reach Karachi ठीक अछि एक्चुअली कोन होछि एबे पाकिस्तान कोन कोछि सी तार मिलिटरी बिल्ड अप करछि सेठी कोडी सर्किट एरिया रे से मिलिटरी बिल्ड अप करछि सी तार दितिना बटालियन सेट रखि साले ठीक अछि दैट्स राइट तो एटा थिला actually कौन थिला from Jammu to pillar 1175 the India Pakistan border passes through the plains hills deserts and marshes marked by pillars actually pillar 1175 कोड एटा हला सर्क्रिक रे pillar 1175 अछि जम्मू माने कोन जीरो बॉर्डर देखो एटा देखो अया देखो एटा हला 1175 पिलर बुझी परछो तो एठू इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हिच एठू पिलर नंबर 0 थ्रू एठी पिलर नंबर 0 या 1 भी कोइ परिबा अकॉर्डिंग टू देम एठू 0 टू 1 स्टार्ट हेकरी इट एंड्स एट 1175 परे जो ए जो जिंसरा एठी पिलर नंबर आसी परला बिकॉज़ ऑफ द डिस्प्यूट्स छोट छोट डिस्प्यूट पे हम पिलर नंबर दे पर ओके तो एडा ही से कहउछंती ठीक अछि देन एडा आरो केबे कोन हेतला 1947 रे इंडिपेंडेंस ला कच्छ इंडिया को पड़ला सिंध पाकिस्तान को पड़ला 1914 एंड 1925 जो दीटा रेजोल्यूशन थिला दैट वाज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग ठीक अछि 1914 रे कोन गोतला ईस्टर्न फ्लैंक कथा गोतला और 1925 ता तालवेक प्रिंसिपल कथा गोतला काहे कि 1914 रे आगोडे दियंतला कि तमे इट्स आई मीन दिस मार्शी एरिया इज मोस्टली नेविगेबल वाटर ठीक अछि मार्शी एरिया इज मोस्टली नेविगेबल वाटर एटा भी 1914 रे कोइछ सेते बा 1925 रेजोल्यूशन रे सेमा तालवेक प्रिंसिपल रे जिक्र करछन्ती सो इंडिया इज यूजिंग 1925 पाकिस्तान इज 1914 ठीक अछि एंड दैट कोन रन ऑफ कच्छ वाज नेवर पार्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान क्लेम इज रॉन्ग ठीक अछि क्लेम माने कोन पाकिस्तान कोजे सर्किट बिलोंग्स टू सिंध माने सर्किट होल सर्किट बिलोंग्स टू सिंध लाइक पैराग्राफ 9 एंड मिडल लाइन प्रिंसिपल
तापर 1965 रे कॉन्फ्लिक्ट हेतला मु को कॉन्फ्लिक्ट कोतली ऑपरेशन गिब्राल्टर नो ऑपरेशन डेजर्ट हॉक जो 4 मास पूर्व हेतला है ना एटा हला 25 अप्रैल और अटैक 1965 वॉर के बेतला अगस्त स्टार्ट हेतला तो 4 मास पूर्व हेतला 25 अप्रैल 1965 triggered larger India Pakistan conflict later than year India increased surveillance Pakistan accused of India of aggression ठीक अछि तापर ट्रिब्यूनल अवार्ड दिले 90% इंडिया एटा एक्चुअली सब मन रखिया होता ट्रिब्यूनल कोन कहूछ ट्रिब्यूनल केते अवार्ड दोछ बुझि पारछो सो इट डिपेंड्स ऑन यू तो मन रखियो कि नाही ठीक अछि काहेकि पचार दबो 1968 इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रे केते परसेंट इंडिया को मिलथिला केते परसेंट पाकिस्तान को मिलथिला सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट 90% बिलोंग्स टू इंडिया या 10% टू पाकिस्तान क्वेश्चन एमिति भी दे परियो 10% टू इंडिया 90% टू पाकिस्तान सो दैट इज डिफरेंट राइट सेमिथिले क्वेश्चन तमरा माने जो जानना तो बोले परियो तापरे asked both countries to resolve circuit bilaterally काहेकि देखो 1968 रे माने कोन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल आसला बायलैटरल कोइतला तापरे 1972 रे कोन आसला शिमला एग्रीमेंट आसला शिमला एग्रीमेंट रे बेसिस ला कोन यू हैव टू रिजॉल्व ऑल द इश्यूज बायलैटरली तापरे तमे आर इंटरनेशनलाइजेशन हे परिबो नाही ए सर्किट को नै तापरे 1990 टू 2000 मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक्स नो सॉल्यूशंस बुझि पाछो तापरे जानि छे कोन कोन होची ठीक अछि and you know why this is very important why this small strip of land is very important ठीक अछि तारे भी बहुत सारा रीजंस अछि पाकिस्तान एपटे ना माकरंद कोस्ट रे ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन करछे विथ टर्की ना तांको टर्की संगे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन करछे जदि ए पूरा कोन माशी एरिया को पाकिस्तान पाई जिवो बुझि परछो तो हमें जानि छे exclusive economic zone is 200 nautical mile ठीक अछि जदि पूरा ट्रिप ता जदि पाई जबो ना then Pakistan will get whole of this trip बुझि परछो ए पूरा पाकिस्तान पाई जबो माने एडा भी पाई जबो बुझि परछो एंड एठी कोन अछि हाइड्रोकार्बन्स अछि हाइड्रोकार्बन दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपोर्टेंट हाइड्रोकार्बन सकासे पाकिस्तान कहूछ नाही आई नीड दिस एंड इंडिया भी चाहेबोनी इंडिया कोन कहूछ इंडिया कोन कहूछ इंडिया कोन कहूछ आइदर तो मैं हाफ टा नियो नले वर्क करो ठीक अछि यदि हम वर्क करले तो पूरा भी नहीं परिबे हमें ए जो स्ट्रिप टा पूरा बुझि पाछो एठू वाला माने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रो आइडेंटिफिकेशन होछ ठीक अछि दैट्स व्हाई काइंडली ए जगह रे बहुत सारा हाइड्रोकार्बन सचेज एंड के भी दबा के भी छाड़ीबेनी हाइड्रोकार्बन्स नोबडी विल माने ऑब्वियसली एटी आगु जेतले एक्सप्लोरेशन होबो ना इफ यू फाइंड हाइड्रोकार्बन्स हम इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत भलो हे परियो हम जा भी एनर्जी प्रॉब्लम फेस करछ ना आगु को कमी जो सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि बुझि पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक 200 जोन तमे एई जगह तमे निजर जोन रे तमे जहा भी एक्सप्लोरेशन कर परिबो तो एटा थिला स्टोरी थिला पाकिस्तान नेवी एस्टैब्लिश 6 मराइन सिक्योरिटी पोस्ट बुझि परछो ए जगह से माने 6टा मराइन सिक्योरिटी पोस्ट एस्टैब्लिश करछंदी कोडी बिटवीन बंदाधोरा एंड हरामी नाला बुझि परछो एडाला खेती बंदर आ एठी हरामी नाला भी अछि तो से माने कोन करछंदी 6 मराइन सिक्योरिटी पोस्ट से माने एस्टैब्लिश करिसंती ए दीडा ए जगह ठीक अछि dozens of coastal defense boats marine assault crafts naval ships and patrolling speed boats are deployed for deterrence ठीक अछि एंड से माने एठी ना बहुत सारा बटालियन भी एठी बहुत सारा बटालियन भी से माने डिप्लॉय करसला माने नुवा बटालियन से फॉर्म करछंती ठीक अछि तापरे एंड आई हैव ब्रॉट योर क्वेश्चन है ना ठीक अछि ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन जे भी हाइलाइट्स देखिबे तार मैं तुम पॉज करी कि तुम आंसर करे चेष्टा करो consider the following statements regarding the circuit dispute between India and Pakistan the dispute originated due to contradictory British era resolutions of 1914 and 1925 tapare the 1968 Indo-Pakistan tribunal awarded the entire circuit region to India tapare the Thalweg doctrine is accepted by India but rejected by Pakistan for circuit agudela Circric is the only standing dispute between India and Pakistan with respect to international boundary. बुझी पारछो? Try to answer. It's a very good question. जेतल बनछ माने टिके डेप्थ को जाय बना पड़े ठीक अछि 1 only 1 and 2 only 1 3 and 4 only 1 and 3 only circuit dispute
the dispute originated due to the contradictory British era resolution जोड़ा कि map था 1914. Okay, Lakshmi Priya, hi, pranam, ठीक हो जी. Today we all are late actually. Try to DP Mishra कहते हैं C होगा 1, 3 and 4, right? You are saying it's 1, 3 and 4. Let me see. The dispute originated due to contracted British era resolutions of 1914 and 1921. This is right. ठीक ଅଛି, this is right. तापरे आउ गोटे है कि 1968 इंडिया पाकिस्तान ट्रिब्यूनल अवार्डेड एंटायर सिक नो आमे जानछो 90% टेरिटरी टू इंडिया 10% टेरिटरी टू पाकिस्तान. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. तापरे आउ गोटे है कि द तालबेक डॉक्ट्रिन, obviously जो middle line वाला तालबेक डॉक्ट्रिन is accepted by India but rejected by Pakistan. That is also right. That is also right. ठीक है. आउ गोटे है कि the Sir Creek is the only standing dispute between India and Pakistan with respect to international boundary. Are you sure? Sir Creek is the only standing dispute between India and Pakistan with respect to international boundary. एक क्वेश्चन ए जो स्टेटमेंट तुम कौन लागुछ? I think that is right. Thank you. Sir Creek is the only standing. Yes, Sir Creek is the only standing. Thank you. International boundary जोटा अच्छी this one. देखो आम जो international boundary जोटा अच्छी this is the international boundary. एठी किछि dispute नहीं. There is no dispute here. ठीक अछि. Dispute टा कोड होछ एठो होछ ए पिलर नंबर 1175 रे होछ. This is called international boundary and ए जो boundary रे टिके कोन अछि dispute अछि. बाकी आ एडा कोन थिला? एडा थिला हमर LOC. What is this? This is LOC. ठीक अछि. This is not an international boundary. एडा ceasefire line अछि. जो दिन एडाला what wrong? No, it is right. Sir Creek is only dispute. आउ किछि नहीं हमर. Dispute खाली international boundary रे खाली dispute होजे Sir Creek. आउ किछि नहीं. बुझि परछ? देखो देखो from Jammu to pillar 117 the India Pakistan border passes through plains, hill, desert marked by number with pillar 117 being the westernmost mark near a disputed strategically important area. देखो ए जो कोडी गला या देखो मुझे कोनी एटा कोनी. हां, this is the international boundary. एठी किछि dispute नहीं. There is no dispute here. ठीक अछि. Okay, mini bag, good morning. है ना, जो try to solve the questions. ठीक अछि. तो एठो वाला हमर dispute strategy. This is also international boundary. So international boundary हिसाब रे there is only one dispute, that is Sir Creek. और LOC तो माने ceasefire line सेटा. LOC this is ceasefire. This is not international boundary. It international boundary no. आपको जस्ट ना दिया जे शिमला एग्रीमेंट रे LOC एंड आपको अगर कोन होंदे ceasefire line भी कोन. ठीक अछि. So this is the only international boundary. ए जिनकर मु कहै चाहतली हला हम international boundary starts from Jammu to Sir Creek. बुझि पर. And to be precise pillar number 1175 जगह रे proper demarcation हिच नले हे. बुझि परछ. So टिके conceptual पडिबो. न जानले तुम केम करिवो. तब जम जानि परथबो international boundary कोटा. And ए जो सियाचिन टा हमर एडा हम हाथ रे अछि. Then एडा हला पूरा जम्मू कश्मीर रीजन टा अछि. आको हम इंटरनेशनल बाउंड्री दर्जा देइनु काहे एटे पाकिस्तान ऑक्युपाइड अछि. एटे अक्साई चीन अछि, है ना. So this is controlled by China. मैप भी ठीक भल से पड़िबो. एठी हला जम्मू, एठू हला and Jammu is 10 km above from the international boundary. बुझि परछ. जम्मू साइड रे सियालकोट भी अछि एठी. बुझ एठी लाहौर भी अछि. टिके तळगु लाहौर भी पड़ेबो. एक्चुअली जेतळे माने पाकिस्तान जो अटैक करथल ना, पाकिस्तान जम्मू ऊपर बहुत अटैक करथल सेतळे. जम्मू इज वेरी नियर टू द बाउंड्री. बुझि परछ. दैट्स व्हाई एडा गोटे माने इट वाज अ नाइस क्वेश्चन. बुझि परछ. So I hope the Sir Creek doubts माने सेटल्ड. ठीक अछि. टिके भलर से पढिया कथा नले केमित हबो. ठीक अछि. एडी हरामी नाला भी कोन. बुझि परछ. तो जानि था हरामी नाला या केती बंदर जदि क्वेश्चन पचार तो इट्स ऑल रिलेटेड टू Sir Creek. ठीक अछि. या हमें आउट है या अब नेक्स्ट को जीवा. At the 7th Moscow format consultations on Afghanistan. ठीक अछि. India has aligned with the Taliban, Pakistan, China and Russia to oppose Trump's plan to take control of the Bagram airbase in Afghanistan.
First of all, where is Bagram Air Base? You should know that is in Afghanistan. एटा तुमको जानिया को पड़िबो. Bagram Air Base is situated at Afghanistan. ठीक अछि. आ गोटे हला कि Moscow format. Moscow format भी तुमको जानिया पड़िबो. Moscow format direct question पचार दो what is Moscow format. एमिति तापर लास्ट को एमिति देखिबो जे कोड तुम जाननो बिली. You have to know what is Moscow format. ठीक अछि. Moscow format is largely for Afghanistan stability. ठीक अछि. 2017 रे स्टार्ट हेतला एटा. ठीक अछि. Moscow format is largely designed to stabilize Afghanistan. एटा तुमको जानिया पड़िबो. एबे कोन हेतला ट्रम्प कोन कोतला ए जो बाग्राम एयर बेस अछि ना इट्स अ वेरी माने अफगानिस्तान रो बे शान कहि परिबो. इंग्लिश हेतले बाग्राम जेतले यूएसए कंट्रोल करथला ना ता पूर्व अफगानिस्तान भी माने रशिया भी कंट्रोल करथला. जेतले रशिया अफगान वॉर हेतला से तळे से माने बाग्राम रे ए जो बाग्राम एयर बेस को से माने डेवलप करथले. They have developed this Bagram air base. ठीक अछि. And it is a highly sophisticated air base. एबे भी बहुत भलो अछि. माने यूएसए इट एक्चुअली केते अराउंड 45 हेक्टेयर एरिया रे अछि. 45 हेक्टेयर एरिया रे ए बाग्राम एयर बेस अछि. वेरी ह्यूज एरिया, वेरी सोफिस्टिकेटेड एरिया. बुझि पड़तो से ट्रेनिंग भी होय. इट बहुत बड़ा फैसिलिटीज अछि. माने अराउंड 5000 सोल्जर्स रहि परिबे. एते बड़ा बाग्राम एयर बेस. बुझि पड़तो. So Afghanistan largest air base is suitable for landing large military planes and weapons carriers and was vacated by US forces before the 2021 withdrawal from Afghanistan. Obviously the 2021 itle Afghanistan withdraw kortele, they withdrew from Bagram air base. ठीक अछि. ठीक अछि. So my only question is that which of the following countries are a part of Moscow format? ठीक अछि. Which of the following एडा मु कहिबे एडा why it is important I will tell you है ना. आगु क्वेश्चन पचार दो Moscow format पर क्वेश्चन पचार दो. Try to answer this question. Which of the following countries are a part of Moscow format? ठीक अछि. Actually कोन ए जो Moscow format रे कोन अछि it is largely comprised of Central Asia countries. ठीक अछि. Central Asia countries plus Pakistan, India, Iran, आउ China. ठीक अछि. Moscow format. एमाने they wanted to stabilize. D 1 and 5 right. Okay. DB मिश्रा D goes ना. So obviously तुर्की होबनी, यूएई होबनी, साउदी होबनी, चाइना होबनी. ठीक अछि. So mostly साउथ एशिया रो के जिबे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. मिडिल ईस्ट रो के जिबे ईरान जिबो. तापरे आउ हमर कोटा रहिला. तापरे बाकी सब के रहिबे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान आउ तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान. एमाने 4 जन रहिबे. एमाने 5 जन रहिबे और एठु 5 जन रहिबे. ठीक अछि. सो इट्स ऑलमोस्ट 10 कंट्री फॉर्मेट. ठीक अछि. एटा तुमको जानिया को पड़िबो. आइ द सेंट्रल एशिया भी रहउची और साउथ एशिया कंट्रीज भी रहउची एंड रशिया रहउची. You should know this Moscow format. काली के क्वेश्चन पचारि पारि. आगु ए सो क्वेश्चन देखि जो केमते होची. तो तुमको आउट ऑफ द बॉक्स प्रिपरेशन करिवार अछि. I hope that settled the discussion. And it's Moscow format is for what? Moscow format is for what? This Afghanistan stabilization. I hope you are getting. एटा थिला ये कोन थिला इंडिया रिफॉर्म सपोर्ट फॉर पीसफुल स्टेबल अफगानिस्तान एट मॉस्को फॉर्मेट. बैकग्राउंड के पेतला रशिया रे 2017 रे लॉन्च हेतला. They're aimed at promoting regional stability and inclusive peace. It brings to the Afghanistan negotiation countries. माने जेतला तालिबान टेक ओवर हेतला ना किस टाइम पे होल्ड हेतला. एबे they have resumed it. ठीक अछि. लास्ट टाइम ये ठीक अछि. एबे गोटे रिसेंटली गोटे मूवी आछि हक, right? Haq movie आछि. It was related the case that shook the government. She is a Shahbanu case. She is Shahbanu. है ना. I think this picture was taken at 1985 I guess. है ना. ये जो मूवी आछि a case that changed Indian history. काहेकि Indian history I will tell you. ठीक अछि. I hope this is a good movie. I mean तमे एमदा मूवी तमे watch भी करिया କଥା. तमे जाने କଥା कि actually कोन पीरियड मूवीज रे कोन कि तमे जानि परियो कि से टाइम रे इंडिया रे कोन होतला. So director take some liberty but at the same time से माने किछि original जिंसो भी try करन दवा पे. बुझि परछ. If you give them originality ना then तमु जाना पड़िबो कोन
बिकॉज मूवीटा देखी दिन तले मूवी आई वाज वाचिंग दिस मूवी ना तो जेबे भी एमते मूवी आसीबो ना इफ यू गेट टाइम देन यू वॉच इट अदरवाइज तुम जानछ नेटफ्लिक्स अछि ओके सैटेलाइट तुम देख पारिबो ठीक अछि शाहबानो केस है ना व्हेन राजीव गांधी ओवरटर्न्ड Supreme Court judgment protecting Muslim women's right to maintenance during talaq है ना the Muslim hardliner clerics एडा केबे हितला छ 1985 रे 1985 रे जिंसा था कोन हेतला the what they passed Muslim women protection on divorce act 1986 है ना देखो सुप्रीम कोर्ट गोटे जजमेंट देतला सुप्रीम कोर्ट गोटे जजमेंट देतला 1985 रे ठीक अछि 1985 रे जजमेंट देतला ताको ओवरटर्न करिया पे ओवरटर्न तो कोइ परिबिनी ताको ताको से जजमेंट को टिके नलिफाई करा पे गोटे स्टैट्यूटरी एक्ट आनथिले व्हाट दिस वन मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट ओके दिस लॉ वाज overturned the supreme court verdict in Shabano case ना so you should know this actually कौन हेतला context the Bollywood film set to be released this Friday the Bollywood film set to be released on Friday numbers are already released starting Yami Gautam and all those things है ना देखो the case began with a 62-year-old woman plea for maintenance from her husband after the divorce, sparking a national debate on secularism, minority rights, and need for uniform civil code. देखो Shaban 1970. I will tell you कौन होची देखो. ठीक है. Oh sorry. One minute. देखो एटी कौन होची देखो 1985 रे एक्चुअली देखो एक केस टा 72 रु 1985 को जाइतला ठीक अछि चामनो केस वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट वन ऑफ द डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1972 रे कोन हेतला व्हेन अहमद खान जो शाहबानो हस्बैंड थिला कि से में सी आउट जगह मैरी कर देतला मतलब ही मैरिड ना तापरे ऑब्वियसली जतो मैरिज जतो चालीबोनी देन देयर इज डिस्टर्बेंसेस थाए then what time इस्लाम धर्म में कौन था गोटे जो डिवोर्स हुए ना से माने वन टाइम डिवोर्स दे दियंती वन टाइम डिवोर्स दे दियंती कोन मेहर कोन ठीक अछि मेहर कोन ठीक अछि शाहबानो गोटे मेहर केते रुपीस तो मैं कोइ परिबनी बट शी गोटे वन टाइम सेटलमेंट बट at that time it was not enough to survive on that money in the rest of life so शाहबानो कोन कहला it challenged in the court ठीक अछि शाहबानो कहले नाही मेहर तो देई परिबोनी बट इट चैलेंज द कोर्ट तो बट प्रॉब्लम हला कोर्ट सेतल कोन जे लोअर कोर्ट जो कहउतले एडा हला तमरा मुस्लिम पर्सनल लॉ ठीक अछि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ यू हैव टू कंसल्ट द कोडा वक्फ बोर्ड नहले काजी को कंसल्ट करके तमे निजर ए जो सॉल्यूशन को आडो बट प्रॉब्लम हला कि either neither वक्फ बोर्ड neither काजी आर willing to give a solution थैंक यू सेठी जो महर जो लिखाई छी महर वन टाइम सेटलमेंट था ठीक अछि and this was not acceptable कहेंगे वन टाइम सेटलमेंट जदी भी कर देले इज इट एनफ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ तमे रही परिबो की रेस्ट ऑफ द लाइफ सेही पैसा रही परिबो के तो शाहबानो अपील अगेंस्ट दिस इन द कोर्ट हला ए जिनसोडा हेउतला ठीक अछि जदी जतल अपील कले ना जो लॉयर थिला से माने कोन यूज कले सीआरपीसी 125 सेक्शन 125 1973 रा गोटे थिला आ एडा कोन होते इट डील्स विथ द मेंटेनेंस ठीक अछि आ भीतर कोन इट कैन बी वाइफ डिवोर्सी या एक्स वाइफ या तमे सेपरेटेड हे जाओ आ भीतर ए सब जिंस अछि माने सेक्शन 125 द सीआरपी 975 हला माने शाहबानो फाइल्ड ए पिटिशन अंडर सीआरपीसी 125 सेक्शन आ भीतर कोन कहछि प्रोविजन दैट obligates a person with sufficient means to provide maintenance to those he is responsible for including his wife who is unable to maintain herself माने सीआरपीसी गोटे क्रिमिनल कोड टा क्रिमिनल प्रोसीजर टा जो थरे गोटे इंस्टेंट वाइफ या डेस्टिट्यूट वाइफ को से माने मेंटेनेंस दियंती प्रॉब्लम हला शाहबानो वाज a muslim and this was a secular law she was a muslim and तांकर जो पर्सनल लॉ रे सेटा ऑलरेडी सेटलमेंट ही जाइछ and प्रॉब्लम हला कि can CRPC override personal law एडा हला क्वेश्चन थिला बुझि परछ this was the question बुझि परछ can CRPC override this personal law this was the question and
and court interpretation कौन थिला? No, you have to go to the either तुम वक्फ बोर्ड जाओ ना तो काजी पाक हो जाओ, and that was not enough. And by the way, India is a secular country, and एडा होतला के 1970s or 80s रे होतला, and गोटे मुस्लिम वुमन को भी ताको जस्टिस पाई भी ताको काजी को पाखु जियाक पड़ुची या लॉ बोर्ड को जियाक पड़ुतला. So it's like it's beyond her dignity. ता dignity भी compromise हे पारे, but dignity का compromise न करिया पई गोटे ओवरऑल कोड थिला कोन सीआरपीसी 125 आ भीतर कोन मेंटेनेंस मिलियो आ कोड तम हस्बैंड जो सैलरी अछि सेही हिसाब रे से प्रोपोर्शन रे तुमको मेंटेनेंस मिले. सो शाह बानु फाइल्ड विथ रेस्पेक्ट टू सीआरपीसी 125. ठीक अछि. कौन करला? मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत कौन कहूची? अंडर ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ ए डिवोर्स वुमन इज एंटाइटल्ड टू ए मेंटेनेंस ओनली फॉर द इद्दत पीरियड. इद्दत पीरियड के 3 मंथ्स, मतलब डिवोर्स हैला, तलाक 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 कहलो तापरे 3 मंथ्स पई से तमरो ख्याल रखि परियो, नले गोटे इद्दत रे वन टाइम सेटलमेंट दियंती, इद्दत पीरियड वन टाइम सेटलमेंट दियंती. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, बट एट द सेम टाइम सीआरपीसी 125 को लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस. if you are not married till now, then you can get a lifelong maintenance as per CRPC 125. So आमी कोड़ा प्रेफर को माने गोटे मुस्लिम वुमन कोड़ा प्रेफर करियो? ऑब्वियसली CRPC 125, राइट? ता फ्यूचर भी एट स्टेक ना. so beyond that she can claim support from relatives, माने जेतरा जो पर्सनल लॉ लागिबो, beyond that she can claim support from relatives or the waqf board. बुझी परछो? if the husband दबोनी, then either she will be the responsibility of relatives or waqf board. However, this was found inconsistent with the right to equality and social justice. So ethical dilemma कौन अस्टे? is जो right to equality जोटा अच्छी, is it lower than personal law? that are a problem. बुझी पारछो? तापरे देखो तापरे what was the Shah Bano case? Her ex-husband contested the petition, arguing that under Muslim personal law his liability was limited to the period of iddat, that is 3 months. माने ता हस्बैंड जो होतली I can't go beyond iddat period. तापर मोर responsibility नाही. तापर the responsibility lies for relatives and waqf board. And we know ए जो waqf board हला relatives हेगला, I mean they don't do justice. सेमिति भी समय instant justice so देबे, right? The waiting period of about 3 months after divorce, during which a woman cannot remarry. बुझी पाछो? से इद्दत period रे a Muslim woman can't remarry. कहीं से इद्दत पीरियड रही एंड तार खर्च सब से एक्स हस्बैंड ही चलाउछ. ही स्टेटेड दैट ही हैड पेड हर, से कोन कहला, ही हैड पेड हर मेंटेनेंस फॉर दिस पीरियड एंड आल्सो पेड हर द डिफर्ड महर और डावर व्हिच इज सम पेड एज द राइट ऑफ वाइफ ड्यूरिंग द मैरिज. मतलब बुझी पड़ता से कहले से इद्दत पीरियड रे से ठीक ठाक अमाउंट पे करछि एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे एज पर द शरीयत. ए जिंसडे से कहउछन हला. But Supreme Court had an other ideas. Kona April 23, 1985, a 5-judge constitution bench headed by Chief Justice Y.B. Chandrachud. Y.B. Chandrachud केन छो? आमर जो ex-CJ D.Y. Chandrachud का father थिले. Delivered a unanimous judgment. The court dismissed Khan's appeal and upheld the High Court order. माने court कौन कहला? जो High Court order जोड़ा देछि, so you can go with CRPC section 125 is greater than personal law. एडाला हाई कोर्ट ऑर्डर देतला. सीआरपीसी 125 ग्रेटर देन पर्सनल लॉ. ए जिनसडा हाई कोर्ट ऑर्डर देतला एंड सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर को सस्टेन भी करला. ठीक अछि. व्हाट द सुप्रीम कोर्ट रूल? द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी इज अ सेक्युलर प्रोविजन दैट अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. बुझी पाछो? दैट इज व्हाई इट वाज से जिनसा बहुत पेचिदा थिला कि तमे सेक्युलर लॉ फॉलो करिवो ना पर्सनल लॉ फॉलो करिवो. इट वाज द एथिकल डिबेट एट दैट टाइम. बुझी पारछो? एंड मो हिसाब रे कोन जेतलो व्हेन इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री ना, so everybody has right to equality. This is the fundamental for our country. So you can't go beyond right to equality. तमे गोटे personal law can be greater than the secular law. It's माने morality भी मानिबन ए जिंसटा. बुझी पारो? It stated that provision was enacted to prevent destitution and there was no reason to exclude Muslim movement from its ambit. ए जो provision आगुरी यूज करतले हिंदू movement यूज करतले, Christian movement, Parsi, Jain, Sikh and एडा Muslim movement पई एडा कोन थला डाउट थला ए provision आसीबो ना नाही because they are ruled as per their shariat. बुझियो? personal law. It concluded that if a divorced woman is unable to maintain herself, she is entitled to claim maintenance from her former husband even after that iddat period. बुझी पारछो? That's it. Why did some oppose the Shah Bano?
Facing political pressure, Rajiv Gandhi led Congress government passed the Muslim Women Protection Rights on Divorce Act 1986. बुझी पारछ मुस्लिम वुमन 80 से कौन कले राजीव गांधी कौन कले से माने जो पर्सनल लॉ को से माने तवज्जो देले okay you can go with the personal law ठीक अछि but still there was no clarity that जेतलो गोटे मुस्लिम वुमन आसीबो से सीआरपीसी यूज करिवो ना पर्सनल लॉ यूज करिवो क्लैरिटी ना किंतु एटा गोटे स्टैट्यूटरी प्रोविजन बने देले कोन Protection Rights on Divorce Act 1986 as per जब भी divorce हो ना it was by default that the court is going to use this Protection Rights on Divorce Act 1986. The new law stipulated that a divorced Muslim woman was entitled to a reasonable and fair provision. बुझी पारछ आगुर तमे केते भी पैसा दे दतलो एबे कोन कहछ at least a reasonable and fair provision माने ठीक ठाक पैसा दवा पड़िबो माने एटा तो पूरा कोन हला वेग हेकला ना को जणा पड़नी ना केते पैसा दबो बट सी कोन कहछ reasonable and as per this act you have to give a reasonable and fair provision and maintenance from the period of iddat period तुमको बहुत भलो पैसा दवा पड़ियो ठीक ठाक पैसा दवा so that she can't be dependent on anyone after the iddat period but that is also impossible that is not practical बुझी पाछो after this period the responsibility of maintaining her would shift to her relatives एठिला problem as per this one Protection of Rights on Divorce Act and who would inherit the property and if they were unable to show that work board माने after that she is the responsibility of work board and relatives what did it change देखो जेतल ए जो माने ए जो एक्ट असला ना it was a turning point of Indian history तापर कोन हला हम जो बाकी जो राइट्स ग्रुप उडा थे ना तमे कहू I mean you did appeasement politics and all that this is a pure appeasement politics so ए सब जिंस गोटे नेशनल वाइड मूवमेंट स्टार्ट हला it led to what मतलब I mean defining moment of India's history कौन ला that same year 1986 amid pressure from the Hindu right wing groups माने बुझी पाछो who accused the government माने से माने कोन Hindu right group wing कोन कहउछंदी you are appeasing the Muslim sections to hardliner Muslims the gates of the Babri Masjid in Uttar Pradesh were unlocked under the Congress led government ये हिंदू को खुश करे चाहते मुस्लिम को खुश करे चाहते मुस्लिम को एपटे खुश कर दे हिंदू मान खुश करे पे कौन कले बाबरी मस्जिद गेट को ओपन कर देते बैलेंसिंग बुझी पर दिस इज बैलेंस पॉलिटिक्स एंड सेठू कौन हला बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हला 1992 रे I mean which was a landmark तो कोई भी नहीं which was माने सेठू हमर इंडियन हिस्ट्री पूरा चेंज हे एतला बुझी पर 195 आर्टिकल अस्मिता मोदी कहउछन Thus, the case also provides a pivotal moment. December 6, 1992. केबे हेतला बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हेतला तमे आइदर तमे ए प्रोटेक्शन एक्ट आन न थांतो एंड ए जिंस भी हेन थांतो at least you could have gone with the secular law जदि secular law CRPC 125 रोई थांता ए जो डेमोलिशन भी हेन थांता what I feel बुझी पता तमे अपीजमेंट चक्कर रे बहुत किछि गवे देला माने इंडिया हार्मनी भी एट द स्टेक हेगला बुझी पता What followed the new law? Constitution validity of 1986 was immediately challenged. The lead petitioner was Daniel Latif. ना 2001 रे Daniel Latif है ना आपको challenge करते Supreme Court रे है ना The case came before a 5-judge constitution bench in 2001. The court upheld the act but did so through a creative interpretation that protected the rights of एठी कौन हला ए जो the 1986 रो act को ना माने टिकर लिबरलाइज करले same nothing लिबरलाइज मतलब कौन करले तुमको मेंटेनेंस अमाउंट टिके भलसे दबार अछि बहुत एक्सेस दबार अछि ए जिंसडा कहउथिले बुझी पड़ 2001 रे ना द कोर्ट फोकस्ड ऑन सेक्शन 3 and 1 of the act जो 1986 act अछि which and requires a former husband to make a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her in the iddat period 19 iddat period से कोन जो reasonable and fair amount you have to give them so that she can't be dependent on other people ए जिंसडा कोर्ट कहउतला टिके लिबरलाइज ऑर्डर देतला तापरे the court interprets this to mean that the husband liability was not limited to just 3 months of iddat okay एडा भीतर इंटरप्रिटेशन थिला instead he had to make a one time payment during the iddat period that was large enough to provide her for maintenance of the rest of her life until she remarried मतलब बुझी पाछो तो कोर्ट कहउची तुमको एते पेमेंट दबार अछि माने a amount that she can be I mean the rest of life में माने से रही परिबो but that is not possible that is not feasible right बुझी पाछो तापरे एटा थिला है ना क्लियरिंग एम्बिग्यूटी हला ए सब जिंस को लास्ट को 2024 रे एम्बिग्यूटी क्लियर हला कोन हेतला जो
2024 कहला कि केबे भी डिवोर्स्ड वाइफ अच्छी या एक्स वाइफ अच्छी या वाइफ अच्छी दे कैन अप्रोच सीआरपीसी सेक्शन 125 एठी पर्सनल लॉ काम करिबो नाही कोथला अब्दुल मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना बुझी पाछो इट क्लियर्ड एवरीथिंग बुझी पाछो काहे कि जेतोले ए केसेस आसे ना से माने जानि परन हम जिबो कोड मुस्लिम वुमन डजंट नो वेयर दे विल गो कोर्ट भी कंफ्यूज थाए तो 2024 रे कहले कि कोर्ट माने कौन कहले मुस्लिम वुमन कैन फाइल पिटिशन अंडर सीआरपीसी सेक्शन 125 क्लियर हेगला पर्सनल लॉ कहीं बुझी पार सेठी मेंटेनेंस मिलु छे बुझी पार आ गोटे कथा कहबी 2019 रे मोदी गवर्नमेंट गोटे एक्ट आनथिला फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमन कौन कहि परिबो तो आपन को बहुत क्लियरली इंग्लिश कहबे बहुत भल लागे मते ओडिया सुंदर कहबे ओके ओके ठीक अछि ओके थैंक यू ठीक अछि जस्ट सी 2019 में मोदी गवर्नमेंट गोटे एक्ट आनथिला कोन आनथिला गोटे जिंस देख तो गोटे जिंस देखाइबा है ना जेतले एडा कोन थिला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स हैला वुमन प्रोटेक्शन मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स है ना मोदी गवर्नमेंट कोन आनथिला मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन of rights on marriage 2019 रे आस्तला it was famous for triple talaq case बुझी परछो ट्रिपल तलाक केस 2019 रे मोदी गवर्नमेंट brought muslim women protection of right on marriage muslim women 2000 ट्रिपल तलाक केस को से माने क्रिमिनलाइज कर देथिले 3 ईयर जेल पकेथिले तो तुमे ट्रिपल तलाक भी दे परिबोनी जो 3 थर जो तलाक कहउछन दैट वाज क्रिमिनलाइज्ड बाय मोदी गवर्नमेंट ठीक अछि ए जिंसटा तुमको जानि बार थिला एंड 19 एबे कोन अछि आउट जिंस कोन जानि बार अछि आ भितरे दिस वन डेनियल लतीफ तो जानि बार अछि तुमको ए जिंस भी जाना अब मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना दिस अ लैंडमार्क केस एडा तुमको जानि बार अछि ठीक अछि तो एडा मन रखिबो आ भितर कोन कहले कि इट वाज क्लियर दैट सीआरपीसी सेक्शन 125 लागू होबो नो पर्सनल लॉ यू कैन अप्रोच सीआरपीसी आ गोटे हतला कि शमीमी केस गोटे शमीमी केस थिला शमीमी केस बुझी पाछ शमीमी केस रे एडा हला इलाहाबाद हाईकोर्ट देथला इलाहाबाद हाईकोर्ट कोन कहतला सीआरपीसी लागि परिबो सीआरपीसी सेक्शन 125 यू कैन अप्रोच बट दैट वाज इलाहाबाद हाईकोर्ट मतलब टिके लिमिटेड हे जाउछ बट एठी कोन एठी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देछ बुझी पाछ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोन देला कि तमे सीआरपीसी 125 रे तमे अप्रोच कर परिबो सेक्शन 125 सीआरपीसी तमे अप्रोच करिबो फॉर मेंटेनेंस ठीक अछि तो एडा थिला कि तारो ये थिला देखो एडा आगुरु क्वेश्चन भी पचार एडा यूपी पुलिस एसआई रे पचारथले द एप्लीकेशन ऑफ द मुस्लिम वाइफ अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इज मेंटेनेबल in the family court even after divorce was upheld in the case of Asia Bibi versus state Shamima Faruqi versus Shahid Khan Shabnam Hasmi versus Union of India Husaina Khatun versus state of Bihar बुझी पारो try to attempt this question ठीक अछि एडा करो सेक्शन 125 एबे मु कोन शमीमा फारूकी एठी कोन देला एठी इलाहाबाद हाईकोर्ट कोन कहतला यू कैन अप्रोच वाया सेक्शन 125 सीआरपीसी so this case is very important एडा इलाहाबाद हाईकोर्ट रे जजमेंट देला ठीक अछि दिस वाज अ जजमेंट गिवन बाय द इलाहाबाद हाईकोर्ट नॉट ईयर तो एडा थिला जदी आकु क्वेश्चन चेंज कर परिबे ना तो एड मु ऑप्शन भी दे परिबे अब्दुल समद बुझी पाछ अब्दुल समद केस दे परिबे एडाला सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देतला बुझी पाछ तो आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस हला तो दिस इज शमीमा फारूक एंड ए दीटा केस तुम मन रखिया पड़िबो ठीक अछि आउट क्वेश्चन अछि द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट वाज एनेक्टेड टू प्रोहिबिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग alimony maintenance divorce through triple talaq practice of polygamy try to attempt this question the Muslim woman protection of rights on marriage act was enacted to prohibit which of the following can you answer this question जानी सुनी क्वेश्चन दे ताकि तुम जानी पारिबो कि क्वेश्चन को लेवल रे पचारि परन कोई कंफ्यूजन हे परिबो ए जो क्वेश्चन उडा ना तमे देखिला कंफ्यूज कर परिबो The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act was enacted to prohibit which of the following?
Tell me, alimony, maintenance, divorce through triple talaq, practice of polygamy. This one. এটা কোন ଥିଲା? এটা କେବେ ଆସିଥିଲା এই act ଟା? এটা 1986 year 2019 ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ এই ନମ୍ବରଟା ଦେଇନି. D, practice of polygamy. देखो देखो protection of rights on marriage act, Muslim women protection right on marriage. এটা এটা divorce नुह, এটা divorce नुह. Divorce ଟା 1986 ରେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା 2019 ରେ ଆସିଥିଲା. ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଏଇଟା ଆଣିଥିଲା ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲା. କଣ ଆଣିଥିଲା? ଦ ଫେମସ୍ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ କେସ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାରେଜ. डिवोर्स जदि हेतांदा आर आंसर हेतांदा मेंटेनेंस हेतांदा. जदि डिवोर्स हेतांदा आर आंसर मेंटेनेंस हेतांदा. एट कोन देछे? मैरिज देछे. तो डिवोर्स थ्रू ट्रिपल तलाक. दिस इज द राइट आंसर. बुझी पारछो? दैट्स हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड. बुझी पारछो? क्वेश्चन एमिति फ्रेम करा जाय ताकि यू गेट कंफ्यूज्ड ना. मु सेति पई 2019 लेखि नथिल. ओपीसी भी लेखिबोन तार कोन अछि? लेखिबोन. मु जदि 2019 लिख देथांदी तुमको आइडिया पाई जाता. या मेनी स्टूडेंट्स कैन गेट दे कुड हैव गॉट द आइडिया. बट एठी कोन कली मु प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज. जदि जदि मु डिवोर्स लिखतांदी इट कुड हैव गॉन थ्रू दिस मेंटेनेंस हेतांदा. बुझी पारतो? कहीं प्रोहिबिट करछ, राइट? दे आर प्रोहिबिटिंग. दैट्स व्हाई this was a good question. Yeah, true होबन तो डीपी मिशा इट्स नॉट ट्रू. केमते ट्रू हो? मेंट एडाला प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज. एडाला मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स हेता. एट कोइचे मैरिज कोइचे. मैरिज 2019 वाला एटा हबो ट्रिपल तलाक. एटा जोडा मोदी गवर्नमेंट आनतला. बुझी पारछ? ट्रिकी क्वेश्चन एटा. 2019 जो एक्ट आनतला सेटा कोन? ऑन मैरिज आनतला. दैट वाज ऑन ट्रिपल, माने ट्रिपल तलाक को से माने क्रिमिनलाइज करथले. एठी कोन करथले? ऑन डिवोर्स रे कोन करथले? मेंटेनेंस न दवा पई से एक्ट आनथले. कांगी दे शुड फॉलो दैट इद्दत पीरियड. ओके मो पीओ प्रिपरेशन मिनिबा को पीओ प्रिपरेशन करूची. बट आपन क्लास करे परिबा कथा कांगी मोर आई मीन टिके डेप्थ रे नहीं जाए. बट क्लासेस विल बी लाइक दैट ओनली ना. मु ताइदरे वन लाइनर भी पकाए. आज एटा वन लाइनर थिला. ठीक अछि. तो ट्राई टू डू दिस है ना. किछि नाही. तो जोडी भी नॉलेज पाई परिबो तो भलो कथा. नले शिक्षा को जोडी मिलची सेठी करिया कथा. आ गोटे कथा आजिकली पीओ भी दो सब एग्जाम दियो. कोर्स फी तो नहीं ना. मैंने एग्जाम फी तो किसी ना. तो दियो भल से दियो, आराम से दियो. किए जानछि केतल कोन लक कोडी ओवरटर्न हे जिवो. एंड पीओ एग्जाम इज गुड. तुमको मैथमेटिक्स बहुत सारा करिया को पड़िबो. मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड ऑल दैट दैट्स सबल कसिया को पड़िबो. आ एठी कोन टिके जीएस टिके हाई लेवल को जिया पड़िबो. नले करि परिबे. ठीक अछि. तो हमर फर्स्ट थिला, हमर फर्स्ट आईआर गोटे टॉपिक पळेला, पॉलिटी गोटे टॉपिक पळेला. बुझी परछो? एंड दीज आर अ पार्ट ऑफ पीएसआईआर आल्सो. बुझी परछो? एटा गोटे आउट आईआर टॉपिक आन बीएससी सेकंड सेमेस्टर. ओके हम बीएससी मैथ ऑनर्स से तल तो भलो. तमर तो मैथ तो बहुत भलो होतबो. इफ यू आर मैथ ऑनर्स स्टूडेंट देन तमर सब्जेक्ट ऊपर बहुत भलो पकड़ अछि. देन सेटा तुम एडवांटेज दोछि कि तुम पीओ एग्जाम रे वन डे एग्जाम रे बहुत भलो एडवांटेज दबो. आगु को सीजीएल जो आछबो ता पे भलो एडवांटेज दबो. आ गोटे कथा ना कि एबे जो हमर जो सीसैट जोडा अछि, एबे सीसैट अछि दैट इज चेंजिंग. बुझी पाछो? सीसैट रे एथर बहुत पिला सुनिया को पाइछि फेल भी हिचन. ठीक अछि. तो तो कोन के ओएस रे भी सीसैट भी बहुत प्रॉब्लम करछि ना. तो आगु को सीसैट भी बहुत भल से पढ़िया पड़ियो. यू कैन एक्चुअली तुम सब एग्जाम दबा कथा. बुझी पाछो? इट्स स्टिल योर अर्ली स्टेज, राइट? तापरे एटा गोटे क्वेश्चन था. ए क्वेश्चन दबार कोन आनछो? एटा सब ना नेग्लेक्ट कर दियन. ए क्वेश्चन सोडा माने ए जो टॉपिक उडा ना नेग्लेक्ट कर दियन. Amid Russia tension, Poland to join NATO fuel network. Poland has been considering joining NATO pipeline system for many years. And on Friday, the Defense Ministry and National Pipeline Operator burned
अनबिल्ड 4.7 बिलियन यूरो प्लान ठीक अच्छे एटा वन लाइनर आसी परिबा नाटो नाटो पाइपलाइन रे किए जॉइन करया पे दरखास्त पकई कहीदेव पोलैंड यूक्रेन यूक्रेन तापरे आउ कि देदेव या स्पेन देदेव तापरे पोर्तुगाल गोटे देदेव पोर्तुगाल देबेनी लक्समबर्ग देदेव बुझी पारछ लक्समबर्ग आई एम डैम श्योर अधा पिला यूक्रेन मारिक आसीबे अधा पिला यूक्रेन मारिक आसीबे बुझी पारछ एडा सब छोट छोट जिंस एडा इग्नोर हो जाए बुझी पारछ तो एडा कोन थिला कि the NATO pipeline system is designed to ensure that NATO's requirement for petroleum products and their distribution can be met at all times माने एक्चुअली कौन देखो जो NATO पाइपलाइन जो क्रिएट हुए ना तार जो लॉजिस्टिक्स अच्छी द प्लेन अच्छी या वॉर प्लेन्स अच्छी या इवन एट सिविलियन प्लेन्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर और नीड्स तुमको तुम बाकी सब तुम पठे पार माने सपोज नाटोर किसी ऑपरेशन सबार अच्छी ना मिडिल ईस्ट किसी ऑपरेशन सबार तो नाटो पाइपलाइन एक्चुअली पाइपलाइन कौन अच्छी जो यूरोपियन कंट्रीज अच्छा नाटोर जो यूरोपियन कंट्रीज अच्छा एमती सब लगी बुझीपार एठू पाइप जाए एटू गोटे जगह पशुव एठू कौन एयरपोर्ट थो एठू से रिफिलिंग करते सेमती जिगजैग मैनर सब पाइपटा जाइए जिनसा हो किसी नहीं कौन इन टोटल अप्रोक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर्स लॉन्ग it runs through 12 NATO countries. This is very important. 12. NATO रे कितना country अच्छे? Can you tell me how many countries are there in NATO group? That's a very valid question. It has a storage capacity of 4.1 million cubic meter. It inks together storage depots, military air bases, military air bases, civil airport, pumping stations, trunk. माने it's all over, all round. ठीक है? This NATO pipeline can be used for everything. बुझी पार? हमारे हबार तापी तापी पाइपलाइन जो जाने सब किंतु है सेटा बिकॉज पाकिस्तान ता भीतर पड़छ दिस सिस्टम्स आर फंडेड थ्रू नाटो सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कंट्रोल एंड दिस ऑल द तुम पढ़थबो ठीक अछि आ गुटे हां तो एटा थला कि नाटो पाइपलाइन ऊपर थला एटा गोटे क्वेश्चन आनी छी हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और राइट करेक्ट हला आ गुटे कथा हला ए जो नाटो पाइपलाइन जेबे हेतला ना इट इज ए कोल्ड वॉर एरा रो आस्तला ठीक अछि कोल्ड वॉर एरा ठीक अछि जेतला यूएसआर वर्सेस हमर यूएसआर वर्सेस जो यूएसए जो चलतला कंपटीशन थला से माने यूएसए गोटे डिटरेंट पई एरा नाटो पाइपलाइन आस्तला सपोज किछ वॉर हे जबो देन पाइपलाइन थ्रू तमे फ्यूल गोडा तमे पंप अप करि परिबो सब बडा ठीक है ठीक है ए क्वेश्चन टा करो है ना NATO pipeline was set up during established by the signing of North Atlantic Treaty in it as NATO. This is the Poland is the latest entrant seeking to join the pipeline. All NATO members countries are connected to the NPS. Can you tell me which is the right answer? NATO pipeline was set up during established with signing of NATO in NATO Treaty in 1949. This is the latest entrant and Poland is the latest entrant. All NATO members countries are connected to the NPS. ठीक है so try to attempt this question if not we will discuss in the next class right it's a very good question thank you janiya kotha imbe question जो आसुची पडुची if not then you will have a problem ठीक है so I am falling short of time हमें next class रे एटा attempt करिया ठीक है so thank you all be on time have a good day